विदाउट एक्सेस का कोई भी स्टूडेंट्स और या फिर अनऑथराइज पर्सन अंदर नहीं आ सकता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और देखिए इंटीरियर कितनी अच्छी है। अभी हम लोग चलेंगे लैब प्रैक्टिकल की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लैबोरेटोरिया लिखा हुआ है, ये लैब टाइप का है, देखते क्या अंदर में। ये देखिए, ये लैब क्लासरूम है जहाँ पे थियोरेटिकल होता है, और थियोरेटिकल में जो लैब का जो डिस्कशन होता है वो बिल्कुल यही है। और हर यहाँ पे सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमने देखा है कि ये फॉरेन में, स्पेशली अगर समरकांत की बात करें तो यहाँ पे 14 स्टूडेंट 15 स्टूडेंट का ग्रुप बनता है, और ग्रुप के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल होता है। लेक्चर, कॉमन लेक्चर जो होते हैं वो तो हो जाते हैं ज़्यादा संख्या में, लेकिन जो क्लासरूम का जो प्रैक्टिकल होता है वो बिल्कुल 14-15 स्टूडेंट का जो ग्रुप होता है, ग्रुप बाय ग्रुप होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्लासरूम में वही 12-14 सीटिंग ही है। तो इस तरीके का हर सब्जेक्ट का जो कि अलग अलग प्रैक्टिकल रूम है, क्लासरूम है, और उसके अकॉर्डिंग जो कि सब कुछ होता है। सम फोटोग्राफ एंड वीडियोज ऑफ म्यूजियम। सो फाइनली अभी हम लोग चल रहे हैं एनाटॉमी म्यूजियम की तरफ। कंटिन्यू कीजिए। सो गाइस, फाइनली अभी हम लोग समरकांद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जैसा कि हमने आपको बताया था, और मैं अभी एनाटॉमी बिल्डिंग के अंदर हूँ। और एनाटॉमी बिल्डिंग में बिल्कुल 3D सिस्टम लगा हुआ है, और ये इंडियन फैकल्टी हैं जो बच्चों को टीच करते हैं। सो सर प्लीज एक्सप्लेन। Yes, depending on the subject which okay, so depending on the subject which we are supposed to be teaching, for example, we are here at the anatomy department. Anatomy is basically teaching the structure and the composition of the human body, right? So it depends. In first semester, when you guys join here for the first time, you'd probably be having to learn about the bones, the joints, and the muscles. So I'll give you a brief idea about how we can show and teach. So as you can see, we can isolate the rest of the organs out and isolate the particular thing that we need to teach. So suppose we want to talk about muscles, right? Any part of the human body which we take, right? We can pinpoint, for example, let us go towards the thighs. All right, here's the thighs, and we need to look into the muscles that are present here. Let's remove these fascias, and we can pinpoint the muscles. This is the rectus femoris muscle. You remove it, and you have 3 vastus muscles present here. Each one can be tamed individually: intermediate vastus and lateral vastus. We remove them. Now we can see that on a much superficial layer what are present. You have the string-like muscle right here, which is the sartorius muscle. It is the lengthiest muscle, and it's ribbon-shaped. Right. Moving in, as you can see, we can go deeper, 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 and keep learning about the muscles that are present in a very isolated form. Is that clear? All right, moving on towards the rear side, we also have our hamstring muscles which are present here. You have your biceps femoris muscles, right? You have your semitendinous, semimembranosus, all of these muscles. When you go deeper into, you will be able to learn it layer by layer, right? जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा एनाटॉमी का ये 3D लगा हुआ है, इसी तरह से ऑल क्लिनिकल सब्जेक्ट का जो भी एनाटॉमी हो गया, जैसे फिजियोलॉजी हो गया, लाइक और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो हर तरह से जो कि सारे डिपार्टमेंट में सब्जेक्ट सारी चीज़ का व्यवस्था किया गया है। प्रैक्टिकल्स होते हैं, क्लिनिकल्स होते हैं, वीकली जो टेस्ट बोलते हैं, वीकली जिसको वो लोग मॉड्यूल के नाम से जानते हैं, इधर लोग मॉड्यूल बोलते हैं इस चीज़ को। तो वीकली मॉड्यूल भी होते हैं, बच्चे स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते चले जा रहे हैं और एक अच्छे सक्सेसफुल डॉक्टर बन रहे हैं। सो गाइस, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।